हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं आप सबका फिर से तहे दिल से मेरे चैनल में इस्तकबाल करता हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, थैंक यू। I welcome you again to my channel, and today we will delve into the last part of Sahir Ludhianvi's magnum opus, Parchchaiyan. Just to remind everyone, this was written during the Arab Israel war, the Suez Crisis in 1956. So it is quite topical. ये नज्म साहिर लुधियानवी में पहले मर्तबा इजरायली अरबी जंग, जो पहली जंग हुई थी, सुएज क्राइसिस, उसके दौरान इन्होंने ये नज्म पहले मर्तबा उन्होंने ये नज्म कही थी। और ये आज भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो अभी हालात हैं, because of that reason, it is very topical right now. So in this part of the poem, the last part of the poem, he describes, now he harkens back to the first part where he described him and his lover as the placeholders for humanity, around which the background of the war takes precedence. And now he brings his and his lover into the foreground, what happens after the war. तो अब जंग की जो तबाही हो चुकी है, उसके बाद साहिर अपने आप को और अपनी महबूबा को फिर से पसे आईना लाते हैं और फिर जिक्र हाल करते हैं जंग की तबाही के बाद की कहानी का। तुम आ रही हो सरे शाम बाल बिखराए, हजार गुना मलामत का बार उठाए हुए, हवस परस्त निगाहों की चीरादस्ती से बदन की झेंपती उरियानियां छुपाए हुए. So this is the girl who was driven out of her house and had to sell her body in the bazaar of humanity to live. And he says, तुम आ रही हो सरे शाम बाल बिखराए हुए, हजार गुना मलामत का बार उठाए हुए, हवस परस्त निगाहों की चीरादस्ती से बदन की झेंपती उरियानियां छुपाए हुए. So he says, हवस परस्त निगाहें, हवस, lust, हवस परस्त, someone who worships lust in a very base manner. हवस परस्त निगाहें are those eyes who disrobe you with their eyes of lust. हवस परस्त निगाही की चीरादस्ती, चीरादस्ती is basically disrobing and assault of you. बदन की झेंपती उरियानियां छुपाए हुए, उरियानियां basically means your sexual secondary sexual characteristics, your breasts and those which are lusted after. Uryaniya comes from what Oran, anyway, there is a biblical story and the Quranic story of Oran, which we don't want to get into. But yes, this is what he says, right? तुम आ रही हो सरे शाम बाल बिखराए, हजार गुना मलामत का बार उठाए हुए, हमस परस्त निगाहों की चीरादस्ती से बदन की झेंपती उरियानियां छुपाए हुए. मैं शहर जाके हर एक दर पे झांक आया हूं, किसी जगह मेरी मेहनत का मोल मिल न सका. सितमगरों के सियासी कमार खाने में अलम नसीब फरासत का मोल मिल न सका. I've been to everywhere. I've looked in every window, in every door. I've looked into the inky, dark gambling houses of powerhouses of these men, where there is no value for humanity, and he's seen it. And then he says, what happens to her at her house? तुम्हारे घर में कयामत का शोर बरपा है, महाज जंग से हरकारा तार लाया है, कि जिसका जिक्र तुम्हें जिंदगी से प्यारा था, वो भाई नरगाए दुश्मन में काम आया है. तुम्हारे घर में कयामत का शोर बरपा है. Your
The noise in your house is so loud, it looks like it's the day of Qayamat, it's the day of judgment. Mahaz-e-jang, front of war, the front battlefront. Harkara, back in the day, there used to be runners who would take messages from the battlefront to the next post depot. So he was called a harkara. Actually, the word has a sort of a nice historical touch to it, because back in the day, when there were no written letters, the harkara would actually be the runner, and he would announce the message in the villages. This happened all over in the world. And he says, in this case, he says, Mahaz-e-jang se harkara tar laya hai, has brought a telegram. And so this is a motive that you see in a lot of war movies, be it German war movies, be it American war movies, well, from that time, Indian war movies, is this motive, right? So there is a telegram, the one you're waiting for has come, and the telegram says, yeah, unfortunately, he died. So, तुम्हारे घर में कयामत का शोर बरपा है, महाज जंग से हरकारा तार लाया है, कि जिसका जिक्र तुम्हें जिंदगी से प्यारा है, वो भाई नरगाए दुश्मन में काम आया है. That brother that you loved so much has been martyred in the trap that was laid for the enemy. Kaam aana is actually a very old classical way of saying to have died. हर एक गांव पे बदनामियों का झमघट है, हर एक मोड़ पे रुसवाइयों के मेले हैं. हर एक ग्राम विलेज बदनामियों का जमघट है. बदनामी, कोई बदनाम हुआ, someone's reputation has been destroyed. हर गांव पे बदनामियों का जमघट है, हर मोड़ पे रुसवाइयों के मेले हैं. रुसवा करना is to turn someone away, in a desperate act, to turn someone away. हर एक गांव पे बदनामियों के जमघट हैं, हर एक मोड़ पे रुसवाइयों के मेले हैं. Mela is a fair, रुसवाई का मेला. Now you can see what he means. ना दोस्ती, ना तकल्लुफ, ना दिलबरी, ना खुलूस, किसी का कोई नहीं, आज सब अकेले हैं. ना दोस्ती, no friendship, ना तकल्लुफ, acquaintance, ना दिलबरी, ना खुलूस, किसी का कोई नहीं, आज सब अकेले हैं. वो रहगुजर जो मेरे दिल की तरह सूनी है, ना जाने तुमको कहां लेके जाने वाली है. तुम्हें खरीद रहे हैं ये जमीर के कातिल, उफुक पे खून तमन्नाए दिल की लाली है. वो रहगुजर, your path, जो मेरे दिल की तरह सूनी है, which is as empty as my heart, ना जाने तुमको कहां लेके जाने वाली है. I don't know where this path, this empty path is going to lead you, because तुम्हें खरीद रहे हैं ये जमीर के कातिल. जमीर, conscience, कातिल, murderers. खरीदना, to buy. These murderers of conscience are buying you. उफुक पे खून तमन्नाए दिल की लाली है. So you remember in the very first opening verse of this poem, when he sets the tone and the atmosphere before the war, when he says that जमा रात के सीने में दूधियां आंचल मचल रहा है किसी ख्वाब मरमरी की तरह, you know that, and then he says उफुक फजा में घुल से गए हैं उफुक के नरम खुतूत, right? जमी हंसी है ख्वाबों की सरजमी की तरह, उफुक के नरम खुतूत. He says फजा में घुल से गए हैं, the soft lines of the soft sunrise, the horizon is melting into the atmosphere. So now what he says is, तुम्हें खरीद रहे हैं जमीर के कातिल, उफुक पे खून तमन्नाए दिल की लाली है. Now the horizon is red with the red of the blood of passion. So this is how he makes a connection. And now he goes into memoirs, he goes into remembrance.
सूरज की लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। सूरज की लहू में लिथड़ी हुई वो शाम, the sun is covered in blood and he remembers that bloody evening. चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। The end result of the golden dreams is still the same. I still remember it. उस शाम मुझे मालूम हुआ खेतों की तरह इस दुनिया में सहमी हुई दोशिजाओं की मुस्कान भी बेची जाती है। Not just farms. In this atmosphere, जंग के दौरान, the shy smiles of even the children are on sale. उस शाम मुझे मालूम हुआ कि इस कारगाह जरदारी में दो भोली भाली रूहों की पहचान भी बेची जाती है। Even the very identity of those two innocent souls is up for sale. This is very hard. This is very heavy. उस शाम मुझे मालूम हुआ जब बाप की खेती छिन जाए, ममता के सुनहरे ख्वाबों की अनमोल निशानी बिकती है। That evening I learned that when the fields of my father are forcefully taken, then motherhood's dreams, the immortal signs of the dreams of motherhood, are also sold. उस शाम मुझे मालूम हुआ जब भाई जंग में काम आए, सरमाए के कहबा खाने में बहनों की जवानी बिकती है। That evening I learned, when brothers die in war, the nubile bodies of young sisters are sold in the gambling and the pleasure houses of these men. सूरज की लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। He remembers the end of all these dreams against the background of a blood sun. There is this line from Lord of the Rings, right? When the battle for Helm's Deep happens, of Isengard, not Isengard. A blood moon rises, riders of Gondor. Yeah, so many different cultures paint the sun in the same bloody way that it casts its bloody shadow upon the battlefield. So that's basically the metaphor and the motive that he's invoking here. तुम आज हजारों मील यहां से दूर कहीं तन्हाई में या बज़्मे तरब आराई में, मेरे सपने बुनती होगी बैठी आगोश पराई में, और मैं सीने में गम लेकर दिन रात मशक्कत करता हूं, जीने के खातिर मरता हूं, अपने फन को रुसवा कर अखयार का दामन भरता हूं। मजबूर हो तुम, मजबूर हूं मैं, मजबूर ये दुनिया सारी है, तन का दुख मन पर भारी है। इस दौर में जीने की कीमत या दारो रसन या ख्वारी है। हाँ, इस दौर में जीने की कीमत या दारो रसन या ख्वारी है। मैं दारो रसन तक जा न सका, तुम जहद की हद तक आ न सकी, चाहा तो मगर अपना न सकी। हम तो दो ऐसी रूहें हैं जो मंजिले तकसीम पा न सकी। This is the desolateness of war that he describes. How dreams, everything fall in the wayside and get destroyed when war ends. For whom? For your every man, for your innocent man, not for the people who deal in power. जीने को जिए जाते हैं मगर सांसों में चिताएं जलती हैं, खामोश वफाएं जलती हैं।
संगीन हकीक ज़ारों में ख्वाबों की रिदाएं जलती हैं. Everything burns. The motive is the funeral pyre of the Hindus. और आज जब इन पेड़ों के तले फिर दो साए लहराए हैं, but look, even in spite of all of this, look, there are two souls swaying under the tree. The tree that he talked about in the first part. फिर दो दिल मिलने आए हैं, फिर मौत की आंधी उठी है, फिर जंग के बादल छाए हैं, but they are still there, they are still come. मैं सोच रहा हूं इनका भी अपनी तरह अंजाम ना हो, इनका भी जुनून नाकाम ना हो. I'm thinking, I hope at least these two, let their life not end up like ours. इनका भी जुनून नाकाम ना हो. Let their passion not become failures. इनके भी मुकद्दर में लिखी एक खून में लिथड़ी शाम ना हो. At least in their fate, please let there be no evening written in blood. सूरज के लहू में लिथड़ी वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे. हमारा प्यार हवादीस किताब ला न सका, मगर उन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए. Our love could not reach that purity and वो मुकम्मल नहीं हो सका, मगर उन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए. At least let them obtain that night that they have so longed for. हमें तो कश्मकश ए मार्ग ए बेअमी ही मिली, हमें तो कश्मकश ए मार्ग ए बेअमन ही मिली, उन्हें तो झूमती गाती हयात मिल जाए. कश्मकश ए मार्ग ए बेअमन, कश्मकश स्ट्रगल, मार्ग the way, मार्ग ए बेअमन, this is the path of struggle and without peace. बेअमन, that is what he got, that is what we got. उन्हें तो झूमती गाती हयात मिल जाए. Hayat, life, universe. Let them at least get this singing and dancing life that we could not get. जो हमारे नसीब, हमारे मुकद्दर में नहीं लिखा, at least इन्हें वो नसीब हो जाए. बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का, बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का, कि जब जवां हो बच्चे तो कत्ल हो जाएं. Right? For the siyasat, for the government, for the people sitting in power, यही तो मशगला है सियासत का, कि जवां बच्चे उनकी कत्ल हो जाएं जंग में. Let them be martyred on the battlefields, not those guys sitting in power. No. Right? बहुत दिनों से है ये खब्त हुक्मरानों का कि दूर दूर के मुल्कों में कहत बो जाएं. What they want is, this is the hukm of the hukmarano. Hukmara is the one who dictates, a dictator. Hukmara is actually a dictator, the literal translation. बहुत दिनों से ये खब्त है उनकी कि दूर दूर के मुल्कों में, not in your own country, but let us go in some other countries, कहत बो जाएं. Let us plant seeds of struggle there. See, this is what he refers to. This whole Arab-Israel Suez crisis was triggered by whom? British Petroleum, who went to MI6 and then the CIA. This is what he refers to. And this is not a conspiracy theory. You can please go to the Wikipedia, the declassified documents. They openly admit that they did this, right? I mean, बहुत दिनों से जवानी के ख्वाब वीरां है, बहुत दिनों से मोहब्बत पनाह ढूंढती है. बहुत दिनों से जवानी के ख्वाब, the dreams of youth, वीरां, they are empty. They're not actually empty. वीरां is more desolateness. They're desolate. बहुत दिनों से मोहब्बत पनाह ढूंढती है. All these days, love is looking for refuge. बहुत दिनों से सितम दीदा शाहराहों में निगार जीस्त की इस्मत पनाह ढूंढती है. निगार जीस्त लाइफ, सितम दीदा शाहराहों में
Sitam, sitam is something that is sadness. Zulm is a sadness born out of zulm, of oppression. That is on these shahrahon mein, these avenues of royalty or avenues of people in power. Nigah zist ki ismat panah ढूंढती है, also looks for refuge. चलो कि आज सभी पाएमल रूहों से, चलो आज सभी पाएमाल रूहों से कहें कि अपनी हर एक जख्म को ज़बां कर लें. Come, let us tell everyone today with revolutionary spirit. Let us tell everyone today कि give your wounds voice. हमारा राज हमारा नहीं सभी का है. चलो कि सारे जमाने को राजदां कर लें. Our secrets are not ours. Let the world know what is happening here. So this refers to the Nakba, where Palestinians were driven out of their homes and they had to cross the Sinai desert and became refugees, as how they are still living today. चलो कि चल के सियासी मुकामीरों से कहें कि हमको जंगो जदल के चलन से नफरत है. This is where you see Sahir Ludhianvi strong pacifism come to the fore. चलो कि चल के सियासी मुकामीरों से कहे कि हमको जंगो जदल के चलन से नफरत है. Come, let us go to the chess players of government, of the power, and tell them हमको जंगो जदन के चलन से नफरत है. We do not like war and strife. We hate war and strife. जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास ना आए, हमें हयात के उस पैराहन से नफरत है. So these are people who are passionate about war and blood. जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास ना आए, to those who do not like any other color apart from blood, हमें हयात के उस पैराहन से नफरत है. Parahan is uniform. What Ghalib also said, चिपक रहा है, this is the other side of his revolutionary, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है. So this is from Ghalib, 70 years before Sahir Ludhianvi. So he says, चलो कि चल के सियासी मुकामीरों से कहें कि हमको जंग व जदल के चलन से नफरत है. जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास ना आए, हमें हयात के उस पैराहन से नफरत है. Those people who thirst for blood, we don't like them. कहो कि अब कोई कातिल इधर अगर आया, कहो कि अब कोई कातिल इधर अगर आया, तो हर कदम पे जमीन तंग होती जाएगी. We will stand up. We are the revolutionaries. Tell them, if some of these murderers want to bring their war to our doorstep, तो हर कदम पे जमीन तंग होती जाएगी. At every footstep, the earth itself will disturb them. हर एक मौज हवा रुख बदल के झपटेगी. हर एक शाख रागे संग होती जाएगी, रगे संग होती जाएगी. हर एक मौज हवा, मौज वेव, टाइड, रुख बदल के झपटेगी. Every wind and every wave will jump in protection. हर एक शाख रगे संग होती जाएगी. संग, stone, rug, your circulatory system, basically your blood vessels. So he's saying that har shakh, every branch on every tree is going to become a stone. I cannot really explain this in English. Rage sang is something that you really have to know the language. I'm sorry, I cannot get, but we'll move on. उठो कि आज हर एक जंगजू से ये कह दे, जंगजू वॉरहॉक्स, राइट. उठो कि आज हर एक जंगजू से ये कह दें कि हमको काम की खातिर कलों की हजात है.
हमें किसी की जमीन छीनने का शौक नहीं, हमें तो अपनी जमीन पर हलों की हजात है। हजात नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट। We need jobs, we need arts. We have no interest in stealing the land of anyone else. हमें किसी की जमीन, लैंड छीनने का शौक नहीं। शौक, डिजायर, और जस्ट इट्स माय शौक, इट्स माय हॉबी। हमें तो अपनी जमीन पर हलों की हाजत है। We need plows to plow our own fields. We have no interest in someone else's fields. कहो कि अब कोई ताजीर इधर का रुख ना करे। ताजीर जो ताज पहने, the one who wears the crown, so one who has the power. कहो कि अब कोई ताजीर इधर का रुख ना करे, don't turn here. अब इस जगह कोई कुमारी ना बेची जाएगी। No woman is going to be sold here anymore. ये खेत जाग पड़े, उठ खड़ी हुई फसलें, अब इस जगह कोई क्यारी न बेची जाएगी। Now these fields will arise and we will grow crops here. There will be no more dealing in death and weapons here. ये खेत जाग पड़े, उठ खड़ी हुई फसलें, अब इस जगह कोई क्यारी न बेची जाएगी। ये सरजमी है गौतम और नानक की, इस अर्ज़े पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी। And now he brings it back to India, to Hindustan, to Bharat. Sarzami, he refers to India, Hindustan, Bharat as his sarzameen. It is his land. He says, ये सरजमी है गौतम की और नानक की. This is the land. This is the holy land of Gautam Buddha and of Guru Nanak. इस अर्ज़े पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी। अर्ज ए पाक, दिस इज द लैंड प्योर, पे वहशी दरिंदा, मॉन्स्टर, इस अर्ज ए पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी। हमारा खून अमानत है नस्ल नौ की, हमारे खून पे लश्कर न पल सकेंगे कभी। खून, ब्लड, अमानत, द ट्रेजर, हमारा खून अमानत है नस्ल नौ की। Nasle now, the new generation. Our blood is the property now of the next generation. हमारे खून पे लश्कर ना पल सकेंगे कभी। लश्कर, army. There won't be any more armies raised on our blood. कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहें तो इस दमकते हुए खाकदान की खैर नहीं। Tell them and tell everyone, if we, the pacifists, remain silent today, then there is no saying what is going to happen to this khakdan, khak, dust, khakdan, something that contains dust of earth. इसकी खैर नहीं। जुनून की ढाली हुई अटोमी बलों से, जुनून की ढाली हुई अटोमी बालाओं से जमीन की खैर नहीं, आसमान की खैर नहीं। So, since this was written in 1956, and at that time there were very few atomic powers, namely USA, which was on Israel's side, covertly through CIA, and the other side was USSR, which was again an atomic power, and then you had France and England, which were also with Israel. They were atomic powers. So he warns them, कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहें, tell them if we all stay quiet today, तो इस दमकते हुए खाकदान की खैर नहीं। जुनून की ढाली हुई अटोमी बाला, जुनून, passion, so this is the mad passion that the atomic powers were in. जुनून की ढाली हुई अटोमी बालाओं से जमीन की खैर नहीं, आसमान की खैर नहीं। They don't care about nothing. They don't care about the earth. They don't care about the heavens. And then he leaves us with a warning, which is very poignant. गुज़िश्ते जंग में घर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि तन्हाइयां भी जल जाएं। गुज़िश्ते जंग में पैकर जले मगर इस बार अजब नहीं कि परछाइयां भी जल जाएं। गुज़िश्त means past. So he says, sure, in the past wars,
houses were burned. But it is no wonder that this time even the emptiness will be burned. गुज़िश्ते जंग में पैकर जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयां भी जल जाएं. In previous wars, bodies burned, sure, but it will be no wonder that in the future war, shadows will also be burned. तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं. And this, with part 3, I conclude Parchchaiyan, Sahir's magnum opus. और इसी मिसरे के साथ मैं इस नज़म के अंजाम पर पहुंच चुका हूँ. ख्वाहिश मेरी यही है कि आप सबको ये नज़म और ये व्याख्या पसंद आए. I really hope that you like this particular nazm and its reading. Please keep the message of this poem and this poet in mind, because shit's gonna get ugly. So with that, I will leave you. Thank you. Alvida, Khushamdeed. Namaskar.